class. And last class हमने कहाँ पे खत्म किया था? रेफरेंस इलेक्ट्रोड में खत्म किया था ना? रेफरेंस इलेक्ट्रोड में खत्म किया था। Once you're done, please send your answer on my WhatsApp. Okay. Two more minutes. Simple answer.
Sir, हाँ so I forgot to calculate the E naught. So I'm so sorry. अच्छा अच्छा आपने कैलकुलेशन वेट अ सेकंड फाइजा फोटो नहीं भेज रही है कैथोड विल बी यस करेक्ट एनोड विल बी करेक्ट फाइजा will be yes correct yes फाइजा shooting is fine कैमरा नहीं है फोन में आपके फाइजा Yes, sir, it's there. हाँ वो भेजे ना हमको थोड़ा सा वो भी देखना लाइक हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग एवरीथिंग हैंडराइटिंग कैसे है आपकी वो सब Yes, कुछ sir. देखना है ओके कैथोड आपने सही चूज किया है देखिए जरा उसकी ई नॉट वैल्यू देखिए कैथोड की ये सिरम व्हाट हैपेंड अदर्स राबिया यू हैव नॉट सेंट एनी आंसर तारीफ आपने आंसर नहीं भेजा अभी तक फहद यू हैव नॉट सेंट एनी आंसर टिल नाउ ओके राबिया सेंट बट फिर उन्होंने डिलीट कर दिया ओके चलिए ठीक 1 more minute लेकिन इतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए दिस इज एन इजी क्वेश्चन ठीक है फाइजा ओके 30 सेकंड अच्छा also raise your hand if you do not understand हिंदी अगर आपको हिंदी समझ नहीं आती है ना राबिया आपने गलत किया है इट्स नॉट राइट ठीक है किरण ठीक है बट फिर भी थोड़ा सा और अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता था प्लीज सी हियर गाइस यस राबिया टेल मी हाउ डू वी आइडेंटिफाई एनोड और कैथोड यस राबिया कैसे आइडेंटिफाई किया आपने कि कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा यस राबिया अच्छा दे आर नॉट अलाउइंग यू टू अनम्यूट ऐसे कैसे भाई नो यू कैन प्लीज रीजॉइन प्लीज रीजॉइन राबिया प्लीज रीजॉइन या तारीफ यू टेल मी सॉरी जो से बोलिए जरा तेज से We should check the प्लीज तारीफ oxidation power. okay no, I am asking how will you identify what will you look at Sir, we should check that given electrode.
Given what? Given electrode value. इलेक्ट्रोड वैल्यूज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, देखिए अगर आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं तो फिर बहुत दिक्कत होगी। इफ यू डोंट नो टर्मिनोलॉजीज आल्सो देन इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट ना। आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, तो टेल मी पूरी चीज बताएंगे ना। लुक एट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर उसके बाद क्या देखिएगा। किसी का आपने देख लिया, दिख रहा है, अब किसी को नोट, किसी को भी कैथोड बोल देंगे। व्हाट विल यू सी, व्हाट विल यू नोट कैथोड? मी, no, this is just a waste of my time, you know. Please revise and come, otherwise don't come to the class. Okay, how is it now? Is it still cracking? How is the voice now? Is it fine now? Yes, Yes, Faiza. Okay. Rabia, can you please unmute yourself now? yes, sir. हाँ जी, बताएं. How do you identify whether something is cathode or anode? The SRP value. SRP वैल्यू, ठीक है. कुछ नहीं समझ में आया ना इससे? SRP वैल्यू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? अगर कम हुआ तो एनोड होगा या कम हुआ तो कैथोड होगा? अगर ज्यादा हुआ तो एनोड होगा या ज्यादा हुआ तो कैथोड होगा? पूरी चीज बताइए ना, छुपा क्यों रही हैं आप? यस राबिया, SRP वैल्यू, उसके आगे? ओहो, इफ SRP वैल्यू क्या करना, हायर या लोअर, क्या देखें हम? If the SRP value is low, then it is the anode. ओके, आपने देखा SRP वैल्यू, SRP अगर लो है देन इट इज गोइंग टू बी एनोड. टेल मी विच इज लोअर, -0.74 और -0.44, विच इज लोअर? Minus 0.74. ठीक है, सो -0.74 इज व्हाट, लोअर. लेकिन देखिए हम हमेशा ये बोलेंगे आपको ना कि आप SRP वैल्यू जब भी देखिए तो आप SRP देखिए हायर. उसकी वजह बताते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा उसकी वजह से. आप जब SRP हायर देखिएगा, व्हाट डज इट सेज अबाउट रिडक्शन पोटेंशियल? आपने देखा हाई, देन इट विल बी गेटिंग रिड्यूस्ड. एंड आप क्या दिया हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है. तो हाई किसका है? -0.44 एंड दिस इज फॉर Fe. ठीक है, Fe विल बी गेटिंग रिड्यूस्ड. उसके अलावा जो है आपके पास क्रोमियम, दैट इज गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज, एंड इसका क्या हो जाएगा, उल्टा करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. आपको इसका उल्टा करना पड़ेगा, 0.74 प्लस 0.7. ओके, नाउ ABC you will make the anode, cathode, and this is going to be your cathode, this is going to be your anode. So anode will be oxidation. Oxidation is Fe to Fe2 plus, the salt bridge, chromium to chromium 3 plus, that is reduction. And the E naught will be Fe to Fe2 plus, it is taking 0. It is giving 0.7 volts, then plus -0.44. This will be equal to 0.30 volts. Now if you got this, yes or no, please tell me. Yes, sir. So going on. So we were talking about reference electrode, and in the reference electrode, the most famous electrode that we have to study is the standard hydrogen electrode. So please write the topic. Standard hydrogen electrode. For standard hydrogen electrode, first of all, make the diagram.
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को शॉर्ट फॉर्म में SHE भी कहते हैं. Now let us look at the diagram. In the standard hydrogen electrode, we have first of all a glass tube. Okay. This here, this is a glass tube. And then we have a wire. Okay. And then here we have platinum electrode. Platinum electrode is an inert electrode. It does not do any reaction with the ions that are present in the solution. It just provides surface for the reaction to happen. Now the reaction will happen with what things? Here you have H2, that means hydrogen gas. It is being supplied inside the glass electrode. It is coming down into the solution, and in the solution it is also meeting H3O plus ions. Here you will get H plus ion, you will get OH negative ion, you will get H3 plus ion, you will get water molecules. All the molecules you are going to get here, and the reaction will happen at this platinum electrode. So there is glass tube, there is H2 gas that is incoming at 1 atm, and the solution that we have to take is 1 molar for a standard hydrogen electrode. Agar standard conditions nahi lenge, then you can change these pressure and concentration. Okay, so please write this down, draw this, and then we will write the reactions. So first of all, write. अब देखिए इसका यूज कैसे होगा. For example, if it is used as anode, then I will put SHE as here, then the salt bridge, and then there will be any other electrode. Metal to metal N positive to metal. So reduction is happening here. Here we have SHE. And now if I connect it to any voltmeter here like this, now this voltmeter, whatever voltage it is showing, we will consider that voltage is shown only for this particular electrode, because the electrode potential of SHE is equal to what? It is equal to 0 volts. It is assumed to be 0 because it is acting as a reference. Huh? So standard hydrogen electrode is an example of reference electrode. First of all, right? When it is acting as anode, when acts as, अच्छा, जब एनोड में होगा, then the reaction should be what? Then the reaction should be oxidation. So oxidation reaction क्या हो सकता है? H2 gas is in equilibrium with 2H plus aqueous, or rather not equilibrium, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, giving you 2H plus, and how many electron will be given out? You will be getting 2 electrons. The representation of this will be E naught of H2 upon H plus. This will be equal to how much? This will be equal to 0. Secondly, when acts as cathode, then the reaction will be 2H plus 2 electron gives you H2 gas, and the E naught will be written as E naught H plus 2 H2, and this will also be equal to 0. To represent this, the representation of this electrode will be like this. See, the platinum is in what? The platinum is in touch, which is present because of this H2 gas. So platinum, comma, H2 gas. This platinum is acting as a surface, है ना? और वो किसके लिए है? It is inside the glass tube. That means इसको क्या लिखेंगे हम? H2 के साथ है. And it is getting converted to H plus aqueous. ठीक है? Platinum is not taking part in reaction. Please remember that. Like more. Platinum is used
Acha, okay, for just a second. Platinum is used as surface for the reaction to occur. Representation की बात करें तो I mean this is for the anodic representation, ठीक है? H2 is getting converted to H plus, but we also write platinum because please understand whenever we represent a particular cell, तो हम लोग represent इस वजह से करते हैं ताकि हमको क्या नहीं बनाना पड़े, पूरा वो diagram नहीं बनाना पड़े, है ना? ये photo नहीं बनाना पड़े. Now, what are the important things in this photo? The important thing is that this H2 gas is there. Then you have H plus ions, and you also have platinum electrode. So these are the elements which are being used. तो उन सबको यहाँ लिखा रहता है. And whenever you have to write platinum, it will be with H2 gas. This is for anode. अगर इसी को आपको अगर कैथोड केस में करना है, then it will be H plus to H2 from platinum. This will be the representation if we are putting it as a cathode. Understood, Fahad, now? Fahad, okay, fine. ठीक है. Right, next one. To calculate standard potential of any electrode, it is coupled with SHE. It is coupled with the standard hydrogen electrode. And to calculate the standard potential of any electrode, it is coupled with standard hydrogen electrode. And the potential measured by the cell is taken as the standard electrode potential. नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? इट इज द लिस्ट ऑफ इट इज अ लिस्ट जिसमें हम लोगों ने अलग अलग मेटल को रखा है इन द ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है. And now, if the values of a different electrode potential and these are arranged in a series of increasing and decreasing order, तो उसको क्या बोलते हैं? Electrochemical series बोलते हैं. और you must have learnt about reactivity series in the lower standards. तो वही reactivity series ही क्या है? Electrochemical series है. So please write what is electrochemical series. If the value of different electrode potential are arranged in a series of
increasing or decreasing order then the series is called electrochemical series. The series that we are going to write will be in the increasing order of SRP. Please write. Electrochemical series in increasing order of SRP. ठीक, चलिए यहाँ ध्यान रखिएगा थोड़ा, हिंदी थोड़ी सी आनी चाहिए है ना, हिंदी आएगी तो फिर आप लोगों को आसानी है, otherwise it may be difficult. In order to remember the electrochemical series, you have to understand the concept of barat. बारात पता है सबको? बारात नहीं पता किसी को? All of you know what is barat? Yes or no? Please tell me. Iram, Fahad, Faiza, Tarif and Rabia. Yes, sir. बारात सबको पता है ना? हाल फिलहाल तो लेकिन वहां तो जाने नहीं मिलता होगा बारात आप लोगों को, राइट? कब गए थे लास्ट शादी में इरम आप? कतर में? नहीं, कतर में लास्ट कभी शादी नहीं गई। कभी नहीं गए अभी तक. What about you, तारिक? हाँ सर। नेवर, है ना? तो भूल भी गया मैं क्या क्या होता है बारात में, है ना? चलिए ठीक है. सो लेट अस रिविजिट बारात. क्या क्या होता है बारात में? सबसे पहले बारात है, लेकिन जो बारात है ना वो एक आंख वाले आदमी की है, ठीक है? तो एक आंख वाले को क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में उसको बोलते हैं काना, राइट? क्या बोलते हैं उसको? काना. तो लेके बारात, राइट? लेके बारात काना मजे से आया. ऑब्वियसली काना की शादी होगी तो मजा ही आएगा. मजे से आया, मजा में मजा नहीं आया, मजा लिखने में मजे नहीं आया, मजे से आया. लेके बारात काना मजे से आया. नो, आई डोंट नो आप तो क्या कैसे होता है, बट हमारे यहाँ अगर बारात आती है तो बारात को रुकवा दिया जाता है रात में, ठीक है? और फिर सुबह रुखसती होती है. आप लोग के यहाँ भी ऐसे ही होता है? रुखसती सुबह में होती है या रात में रुखसती हो जाती है? याद ही नहीं किसी को. रात में। शादी रात में ही हो जाती है. अच्छा, हमारे यहाँ सुबह उनको रात में ठहरा लिया जाता है और फिर सुबह रुखसती होती है नाश्ता वास्ता करा के, ठीक है? अब गाँव इलाका है तो नाश्ते से पहले क्या करते हैं बताइए? नाश्ते से पहले क्या करते हैं? ब्रश। ब्रश करते हैं, है ना? लेकिन गांव है तो गांव में क्या करेंगे? मंजन करेंगे. गांव में क्या करेंगे? मंजन करेंगे. मंजन कर मंजन मंजन कर, और मंजन करके क्या फेंकते हैं? मंजन करके फेंक देते हैं. मंजन कर फेंक दे. मंजन कर फेंक दे, आप एक साथ लिखिएगा. मंजन कर फेंक दे, ठीक है? मंजन कर फेंक दे. चलिए उसके बाद नाश्ता वास्ता हो गया. अब आई बात रुखसती की. रुखसती जब होगी तो दुल्हन को गाड़ी में बैठाया गया. जब दुल्हन गाड़ी में बैठी तो फिर कान्हा ने उसको सबसे पहली बार देखा. और कान्हा देख रहा, सबसे पहले क्या देखा उसने? आंखें देखी. आंखें देखी तो उसके मुंह से निकला कोई निगाहें कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी. कोई निगाहें सुंदरी
प्यार, ठीक है, इस पे याद करिए। लेके बारात काना मजे से आया, मंजन कर फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, ठीक है। और ये सारे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं बारात एलिमेंट। ये जो हमारे पास यहाँ पे ये चार हमने लिखा ना, मंजन कर फेंक दे, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, ब्रश एलिमेंट्स। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग व्हीकल एलिमेंट, है ना, गाड़ी के अंदर जब उसने बैठ के देखा। कहाँ कहाँ पे तीन स्टेजेस है। एक तो बारात आया, ठीक है, बारात के बाद सुबह हुई तो फिर उसने मंजन किया, फिर उसके बाद उसने सबसे पहली बार उसको देखा। व्हाट आर द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स लिख लीजिए प्लीज। लेके के लिए लिथियम, पोटेशियम, बेरियम। देन यहाँ पे आप लिखिए काना। काना में आपके पास आ जाएगा कैल्शियम एंड सोडियम, ठीक है। काना पहले कैल्शियम उसके बाद सोडियम, काना। मजे के लिए आ जाएगा Mg। से के लिए आप लिखिएगा स्ट्रॉन्शियम, और आया के लिए लिखिएगा Al। मंजन कर फेंक दे, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम। फेंक दे के लिए आयरन एंड Cd, फेंक दे, फेंक दे, ठीक है ना। कोई निगाहें सुंदरी आंख सुंदरी प्यार भरी, इसमें लिखिएगा कोबाल्ट, निकल। सुंदरी के लिए Sn, प्यार भरी के लिए Pb, प्यार भरी, ठीक है। तो दीज आर द एलिमेंट्स। अब इसके बाद आता है हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद ये क्या है भाई, थोड़ा इधर से खिसका देते हैं। चलिए, अब उसके बाद आया हाइड्रोजन। नाउ वी ऑल नो हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन का होगा 0। और हाइड्रोजन के बाद आप लिखिएगा छापा। छापा में यू हैव दिस इज कॉपर, H से है Hg, A से ही है Ag, और P से है Pt, एंड देन फिर A से है Au, ठीक है। तो गोल्ड का रेट सबसे ज्यादा, गोल्ड का SRP भी सबसे ज्यादा। इन दिस लिस्ट वी हैव बिफोर हाइड्रोजन एंड आफ्टर हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन इज 0, और आफ्टर हाइड्रोजन जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, दिस इज 0। ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनका क्या है, पॉजिटिव SRP। एंड हाइड्रोजन से पहले जितने भी, उनका क्या है, नेगेटिव SRP। यहाँ पे सबसे देखिए इस तरह से जा रही, लेके बारात काना मजे से आया, उसके बाद मंजन कर फेंक दे, उसके बाद कोई निगाहें प्यार भरी, प्यार भरी, फिर हाइड्रोजन, फिर छापा, ठीक है। सो प्लीज राइट दिस डाउन 2-3 बार। चलिए पढ़िए आप लोग खुद से, फिर हम भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। लेट मी नो वंस यू आर डन राइटिंग। बोल बोल के लिखिए बिल्कुल ना। लेके बारात काना मजे से आया, मंजन कर फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, हाइड्रोजन 0, छापा। लेके बारात काना मजे से आया, मंजन कर फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, हाइड्रोजन 0, छापा। प्लीज ऐसे बोल बोल के बिल्कुल रट लीजिए, लिख लीजिए पहले, फिर हम आप लोगों से बुलवाते हैं। इरम कैसे आसार है, आज चांद दिख जाएगा। ये नहीं सिरम नहीं दिखेगा, ओह माय गॉड, नहीं दिखेगा, क्यों। सर न्यूज़ में तो सैटरडे बता रहा था। सैटरडे बता रहा था, ओके। और उधर दुबई में क्या हाल चाल है फहद, चांद दिखेगा आज। फहद क्या कह रहे हैं, नो आइडिया। आई थिंक अभी उधर मलेशिया इंडोनेशिया तरफ दिख जाता है चांद। लेट मी सी।
आधे लोग तो बकवास करते रहते हैं बस ट्विटर पे। एक में लिखा हुआ है मून हैज बीन साइटेड, इंशाल्लाह ईद विल बी ऑन फर्स्ट शव्वाल। I don't see any news here. Eid al-Fitr has been confirmed for the first Shawwal, inshallah. Wow, very nice. There's nothing. Okay, there is some. I don't know which country is this. Ministry of Information and National Guidance. What country? Republic of Uganda. The Republic of Uganda they have, but I don't know how. There is no news. First of Shawwal will be Eid. Very nice. Chale. Kiran, can you please turn your mic on? Yes. लिख लिया आपने? Hmm. चलिए पढ़िए। लेके बारात काना मजे से आया, लेके बारात काना मजे से आया, मंजन कर फेंक दे, मंजन कर फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, हाइड्रोजन जीरो हाइड्रोजन जीरो छापा। छापा। एक बार फिर पढ़िए आप। लेके बारात काना मजे से आया, मंजन कर फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, हाइड्रोजन जीरो छापा। ओके, तारीफ, कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन? आवाज आना बंद हो जाता है आपका तो। तारीफ, हाँ, काम की बात में आवाज ही आनी। यस, चलिए बोलिए। लेके बारात काना मजे से आया, लेके can you tell again, sir? once again, लेके बारात लेके 12 काना मजे से आया। खाना मजे से आया, आपको मतलब समझ में आ रहा है तारीफ? लिटिल सॉरी, लिटिल लिटिल। लिटिल लेके यस बारात मीन्स बारात, बारात लेके आना, समझ में? ही केम विद बारात, राइट? यस काना मीन्स ही इज लाइक ही इज ब्लाइंड इन वन आई, ठीक है, लाइक अ सोमाली पायरेट। तो लेके बारात काना मजे से आया, मजे से आया, मजे का मतलब, मजा का मतलब पता होगा, नहीं पता है? यस एंजॉय हाँ, एंजॉय, राइट। तो लेके बारात मजे में ही आएगा ना, कोई बारात लेकर रो रो के तो नहीं आएगा, है ना? तो लेके बारात काना मजे से आया, ठीक है। देन यू हैव मंजन कर फेंक दे, यू नो मिसवाक, यस सर यू नो मिसवाक, राइट? मिसवाक इज यस सर जस्ट लाइक नॉर्थ इंडियन मंजन समझ लीजिए आप, है ना? तो मंजन, इट इज एक्चुअली मंजन जो होता है दैट इज बिट पाउडर टाइप होता है, जो ब्रश में लगा के कुछ लोग करते हैं, शायद आपने देखा हो। हैव यू सीन समवन पुट पाउडर इन द ब्रश एंड नॉट पेस्ट? यस सर आई थिंक हाँ, तो यस दैट पाउडर इज, हाँ, दैट पाउडर इज मंजन, ओके। ओके सर सो मंजन कर, और मंजन करके मत क्या करते हैं, फेंक देते हैं, राइट? मंजन कर फेंक दे मीन्स थ्रो इट अवे। तो लेके बारात काना मजे से आया, मंजन कर फेंक दे, चल नहीं, मंजन कर फेंक दे, बोलिए। मंजन कर फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, कोई कोई निगाहें निगाह है सुंदरी सुंदरी प्यार भरी, प्यार भरी, मतलब समझ में आ गया इसका? लिटिल नहीं आया? यस सर लिटिल आ गया, इसका तो आ ही जाएगा ना। फिर से चलते, लेके बारात लेके 12 काना मजे से आया, खाना मजे से आया, मंजन कर फेंक दे, मंजन कर फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, कोई कोई निगाहें, कोई निगाहें निगाह है सुंदरी प्यार भरी, सुंदरी, सुंदरी हाइड्रोजन जीरो, हाँ हाँ, हाइड्रोजन जीरो छापा। छापा। एक बार आप ट्राई कीजिए खुद से। लेके
ओके, लेके बारात खाना मजे से आई, मजे से आया, आई नहीं आया। मजे से आया। के बारात खाना मजे से, मजे हो गया ये, मजे से आया, मंजन कर फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, हाइड्रोजन जीरो छापा। ठीक है, चलिए आप पढ़िए एक बार तारीफ। आई थिंक यू कैन रीड दिस। जैसे भारत खाना मजे से आया, मंजन के फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, हाइड्रोजन जीरो छापा। वेरी गुड। चलिए फहद एक बार आप पढ़ लीजिए। यस फहद। लेके बारात खाना मजे से आया, मंजन करके फेंक दे, कोई निगाहें सुंदर प्यार भरी, हाइड्रोजन कॉपर मर्करी सिल्वर नहीं नहीं, प्लेटिनम गोल्ड। हाइड्रोजन जीरो छापा, हाइड्रोजन जीरो। नहीं, वो हाँ आखिरी पार्ट में लिखा है। हाँ, ऊपर लिखा है हमने ना, हाइड्रोजन जीरो और ये छापा, है ना, ऐसे याद रखिए। वो हमसे इससे बोल रहे हैं ना, क्योंकि छापा ये जो वर्ड है ना हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, बिकॉज छापा एलिमेंट्स हैव पॉजिटिव एसआरपी, बारात एलिमेंट दे हैव नेगेटिव एसआरपी। ठीक है, तो हाइड्रोजन जीरो छापा। छापा में अगर आप कंफ्यूज होइएगा सिल्वर पहले आएगा या गोल्ड, तो गोल्ड का रेट ज्यादा तो गोल्ड लास्ट में आएगा, गोल्ड का एसआरपी भी ज्यादा। ठीक है, हाइड्रोजन जीरो छापा। गॉट इट फैन? ओके। ओके, ठीक है। चलिए फायजा। यस सर। लेके बारात खाना मजे से आया, मंजन कर फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, हाइड्रोजन जीरो छापा। ओके, वेरी गुड। राबिया। यस सर। लेके बारात खाना मजे से आया, मंचन पर फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, हाइड्रोजन जीरो छापा। Hydrogen zero छापा. Okay, now we are going to write the applications of electrochemical series. Please write. Applications of इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या बता सकता है? इट कैन टेल यू अबाउट मेनी थिंग्स, अगर इफ यू नो ना, relatively speaking, not absolute things but relatively speaking, they can compare the oxidizing and reducing power, they can talk about the reactivity of metal, they can also talk about the reactivity of non-metals. ठीक है, but non-metals अभी यहाँ पे नहीं है, we have only metals here. Then they can talk about the displacement reaction in solution, and which of the following are going to give you hydrogen gas. सबसे पहले लिखिए नंबर 1, oxidizing and reducing power. ठीक है, हाँ, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है हमने? ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर is directly proportional to SRP, है ना, is directly proportional to SRP. that means क्या बोल सकते हैं, SRP किसकी ज्यादा है इधर? टेल मी, छापा एलिमेंट्स या वेडिंग एलिमेंट्स? ऑब्वियसली छापा एलिमेंट्स की क्या है, SRP ज्यादा है, राइट, बिकॉज दीज आर पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो व्हाट वी कैन से, ऑक्सीडाइजिंग पावर, इसमें ऐसा लिखिए। नेक्स्ट करके रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी ज्यादा? इनवर्सली प्रोपोर्शन टू SRP। ठीक है,
चलिए इसके बारे में हम लोगों ने सवाल भी पहले कर रखा है ना। मूविंग ऑन, राइट नेक्स्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा डिस्प्लेसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? डिस्प्लेसिंग पावर उसकी ज्यादा होगी जिसकी एसआरपी क्या है, कम है। ठीक है, प्लीज राइट, डिस्प्लेसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। ठीक है, इसी में एक सवाल है, प्लीज राइट, एक सेकंड, लेट मी जस्ट ओपन द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में पहला ही सवाल है शायद। Write this question. Arrange the following metals in the order in which they displace each other from solution of their salts. So सबसे ज्यादा डिस्प्लेसिंग पावर किसकी है? जिसकी एसआरपी सबसे कम। हमारे पास दो किस्म के एलिमेंट्स है, पहले वेडिंग एलिमेंट्स है एंड उसके बाद हमारे पास क्या है, छापा एलिमेंट्स है। वेडिंग एलिमेंट्स में तीन कैटेगरी है, एक है बारात, एक है मंजन और एक है निगाहें। सो व्हेन यू हैव द बारात एलिमेंट्स में कौन कौन से आते हैं? एल विल बी इन व्हाट, कहाँ पे होगा एल? बारात में होगा। सबसे पहले बताइए, एल विल बी वेडिंग एलिमेंट और छापा एलिमेंट। एल्यूमिनियम इज अ वेडिंग एलिमेंट और छापा एलिमेंट? वेडिंग। वेडिंग वेडिंग एलिमेंट। एलिमेंट, वेरी गुड। वेडिंग एलिमेंट में कहाँ पे, ये बारात में है या फिर ब्रेक मतलब मंजन करने वाले में है या फिर रुखसती वाले में है? बारात। 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 बारात वाले में है ना, दिस इज फॉर बारात। कॉपर कहाँ पे, वेडिंग एलिमेंट से छापा एलिमेंट? छापा। छापा एलिमेंट, ठीक है। Fe कहाँ पे है, वेडिंग एलिमेंट में, छापा एलिमेंट में? वेडिंग। 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 वेडिंग में कहाँ पे है, बारात में है, मंजन में है या रुखसती में है? मंच। मंजन। मंजन। और ये Mg कहाँ पे है, वेडिंग और छापा? वेडिंग। वेडिंग में, बारात बारात। में है, बारात। बारात में बिफोर एल्यूमिनियम और आफ्टर एल्यूमिनियम? बिफोर एल्यूमिनियम। बिफोर एलिमेंट। बिफोर एल्यूमिनियम। और जिंक, मंच। जिंक इज इन मंजन। मंजन। मंजन में Fe के पहले Fe के बाद है, बिफोर Fe राइट। पहले। हाँ मंजन में ही, मंजन कर फेंक दे आफ्टर में, बिफोर Fe। okay, before Fe. Now here the highest power will be for what? I think Mg right? लेके बारात गाना मजे से आया, Mg का सबसे कम है ना? Mg Yes. has the least value of SRP, followed by बारात में और कौन है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद अब आ जाते हैं मंजन वाले में। मंजन में कौन है, मंजन में जिंक है पहले, फेक में Fe है, देन आई थिंक एल्यूमिनियम हो गया, Fe हो गया, Mg हो गया, अब बचा क्या, सिर्फ कॉपर। Understood how to do these type of question? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Yes, sir. You got this? Okay. I can see Sir, if you Atiya's don't mind, can you scroll a little up? little up. Okay. This is fine. Yes, sir. Okay. Assalamu alaikum, Atiya. Am I audible? I can see Atiya Sultana. Sir, this is Mr. Chavez. अब ऐसे नाम लेके आइएगा आप, असली आईडी से आइए शावेज। इतना लेट? Sorry, this is my mother's. अच्छा, नो प्रॉब्लम। इतना लेट कैसे? So I was at a barber store, so barber shop, so ओह, तो ईद है क्या कल?
आपने तो लगता है लास्ट Friday I think so. फ्राइडे तो Yes, कल ही है। yes sir. लोग भाई भाई की दुकान जा रहे हैं तो मतलब है फिर तो ईद। लेकिन ये सब रीजन नहीं चलेगा। ओके शावेज, Yes अब sir. से ठीक है। देयर इज ओनली वन रीजन जिसके बारे में हम उतना नहीं डांटते, एंड ऑल्सो इफ दैट इज जो रेगुलरली ना करे। इफ यू Yes. अगर आप सो गए तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी दिन आप स्कूल से आए, आपकी नींद लग गई, आंख लग गया, सो गए थोड़ा ज्यादा, लेट हो गया क्लास में, हम नहीं डांटेंगे, ठीक है। और ऐसे भी आज पहली बार लेट हैं, अदरवाइज टाइम पे आइए। अब कैसे पढ़ाएंगे आपको बताइए, इतना सारा कुछ छूट गया आपका टाइम। अब मतलब क्लास खत्म होने वाली है, फिर Yes. क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना। हाँ चलिए, रिकॉर्ड तो हो रही है क्लास, रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा फिर उसकी। ओके, now we have seen the displacing power. Next please write for the choice of anode and cathode. For the choice of anode and cathode, ठीक है। अच्छा, हम एक आपको सीरीज इस तरह से बना के दे दे रहे हैं, rather make it like this, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर में है आपके पास लिथियम से स्टार्ट हो रहा है, नीचे यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन हो गया है, उसके बाद है आपके पास छापा, ठीक है। तो दिस इज अप, ये ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, और छापा क्या है, बिलो, ठीक है। नाउ प्लीज राइट metals higher up in the series has lower SRP, hence used as anode. Metals lower in the series has higher SRP, hence used as cathode, ठीक है। बस समझ में आ गई, चलिए सवाल लिखिएगा। From the following pairs, choose anode and cathode. Zinc and copper, nickel and Ag, iron and copper, और chromium and cadmium, Mg and manganese, aluminum and manganese, cadmium and lead, बेरियम एंड एल्युमिनियम। चलिए कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे। चलिए टेल मी वन, एक कोई एक बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में, जिसको हम कर दें, एंड देन यू ऑल कैन डिसाइड। हाँ जी,
टेल मी एनीवन, ये सब कर लेंगे क्या? अच्छा चलिए ठीक है, आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन डू। ठीक है कीजिए, देन सेंड द आंसर ऑन माय व्हाट्सएप। वंस यू आर डन, सेंड द आंसर ऑन माय व्हाट्सएप। अच्छा एक दो कर लीजिएगा सर ना। हाँ, आपको तो कैन अभी नहीं जस्ट आएगा, आपको भी नहीं आएगा, ये इन लोगों ने पढ़ लिया है अभी। ठीक है शावेज, यस ठीक है, इन लोगों को सवाल लिखने दीजिए, वंस दे हैव रिटन इट डाउन ना, फिर हम आपको बता देंगे कैसे करना है। ठीक है, यस आपको भी वो मिल जाएगा स्टूडेंट, जैसे ये लोग आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, just let me know once you guys are done noting this question down. Done everyone? All of you wrote this question? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. ठीक है, अब शाविद अब यहाँ पे ये देखिए, yesterday you remember we had written some values for reduction potential, yes or no? Last जो class थी हमारी, then we were writing ना these values reduction potential. Yes शावेज? यस सर यस सर हाँ हाँ, ठीक है, माइक ऑन रखिए अभी आप। ठीक है, now when we have this reduction potential in the increasing order, ठीक है, सबसे लोवेस्ट से हाईएस्ट में इसको अगर रखते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, उस सीरीज को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोला जाता है उस सीरीज को? इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, नाउ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे इसको याद रखना है, उसको इस तरह से याद रखिए, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। लेके बारात, देखिए बारात गए हैं आप कभी? नहीं नहीं सीधा अपने में जाइएगा क्या? बारात नहीं गए अभी तक कोई भी? ठीक है, नहीं बारात जब जाती है, अच्छा आपके यहाँ क्या होता है, बारात रुकती है रात में, जी सुबह रुखसती होती है या फिर उसी रात में रुखसती हो जाती है? पानी सर रात में होते रात में रुखसती हो जाती है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ क्या करते हैं, बारात आती है, बारात को रोक के रखते हैं, अगले दिन नाश्ता वाश्ता करके भेजते हैं। ठीक है, सुबह में रुखसती होती है, तो उसी को याद रखिएगा। नाउ जी शादी हो रही है किसकी? शादी हो रही है सोमाली पायलट की। किसकी हो रही है? सोमाली पायलट सोमाली पायलट अंधा होगा एक कान से, एक आंख से, जी है ना? तो जी एक सर एक आंख वाले को क्या बोलते हैं? एक आंख पानी वाले को क्या? हाँ, नहीं मालूम नहीं मालूम आपको? काना बोलते हैं, जी जी काना काना बोलते हैं ना। हाँ, तो लेके बारात काना मजे से आया, कैसे मजे से क्या लेके आएगा ना, एक तो जी जी बारात है, लेके बारात काना मजे से आया, एंड देन रुखसती से पहले नाश्ता कराते हैं, नाश्ता करने से पहले क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश जी करते हैं, है ना? लेकिन ब्रश नहीं करते जी गाँव में, ब्रश नहीं करते, क्या करते हैं, मंजन करते हैं। मंजन पता है आपको? जी मुझे नहीं मालूम मंजन नहीं मालूम? मंजन वो पाउडर होता है ना, जिसको जी उधर ब्रश में लगाते हैं, है ना, उसी जी बोलते हैं मंजन। ठीक है, जी तो नाश्ते से पहले मंजन करा दिया उसको, लेके बारात काना मजे से आया, मंजन कर, उसको बोला मंजन कर फेंक दे, मंजन कर फेंक दे। अब उसके बाद रुखसती जब हुई तो उसने पहली बार दुल्हन को देखा, दुल्हन को देखा तो आंख देखेगा, काना आदमी क्या करेगा, आंख जी देखा, उसने बोला कोई निगाहें सुंदरी प्यार, है ना? क्या बोला उसने? जी कोई कोई निगाहें निगाह सुंदरी प्यार सुंदरी प्यार भरी। तो ये हो गए वेडिंग एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे इनको हम? वेडिंग वेडिंग एलिमेंट। शादीशुदा तो नहीं है, लेकिन शादी में उन्होंने शिरकत की है, तो वेडिंग एलिमेंट्स। देन वी यस हैव हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन का होता है जीरो। व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सब कुछ क्या होता है हाइड्रोजन का? जीरो। जीरो एंड आफ्टर हाइड्रोजन वी हैव द मेटल्स, दैट इज छापा। छापा में क्या क्या आ जाएगा? विल हैव कॉपर, देन यू विल हैव मर्करी, सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड, CuHg Ag Pt and Au। यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेके बारात काना मजे से आया, इसमें यू लेके हैव लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, काना में कैल्शियम एंड सोडियम, मजे में Mg, सी में स्ट्रोंशियम एंड Al में
एल्यूमिनियम मंजन कर फेंक दे में मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन एंड कैडमियम। देन यू विल बी हैविंग कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी में कोबाल्ट, निकल, एंड देन यू विल बी हैविंग टिन, एंड टिन के बाद क्या होगा आपके पास? पीबी, दैट इज लेड, एंड उसके बाद आपके पास क्या है? छापा, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम एंड ए। ठीक है, फिर एक बार पढ़िए इसको। लेके बारात का आना मजे से आया। फिर से पढ़ना है। हाँ पढ़िए इसको, जो लिखा है हमने, लेके बारात का आना मजे से आया। लेके बारात का आना मजे से आया, मंजन कर पेट, ये कोई निगाहें सुंदर। ऐसे नहीं, ऐसे हिज्जा कर करके नहीं, तजवीज से पढ़ना है। लेके बारात का आना मजे से आया। लेके बारात लेके बारात का आना मजे से आया, मंजन कर फेंक दे। हम बोलते हैं मंजन कर फेंक दे, फेंक दे कोई निगाहें कोई निगाहें सुंदरी सुंदरी प्यार प्यार भरी, भरी। प्यार एक बार भरी। फिर से आप बोलते हैं। लेके बारात का आना मजे से आया, मंजन कर फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। हाइड्रोजन जीरो, बोलिए। छापा हाइड्रोजन जीरो, टॉप। छापा। ठीक है, यस सर। ठीक है। लेके बारात का आना मजे से आया, मंजन कर फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, हाइड्रोजन जीरो, छापा। इस तरह से याद रखिएगा। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग the application is for the choice of anode and cathode metals that are higher up in the series. Higher up means lithium हो गया आपके पास, लेके बारात का आना मजे से, वेडिंग वाले एलिमेंट्स है ना। इस तरह से जो ऊपर है वो एनोड होगा, और जो नीचे है वो क्या होगा? कैथोड होगा। ठीक है, अब आप बताइए जिंक और कॉपर में कौन ऊपर है? जिंक ऊपर है या कॉपर ऊपर है? कॉपर। अरे ऐसे तो ना, पहले कौन आ रहा है? पढ़िए, लेके बारात लिखा नहीं आपने। डिड यू राइट इट? यस सर, आई एम राइटिंग सर। अच्छा इसको लिख लीजिए। अच्छा इसको लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए। किसी ने आंसर भेजा फाइजल। ओके, मंजन कर फेंक दे कोई निगाह सुंदरी। ठीक है, मंजन पर फेंक दे कॉपर। ठीक है, मंजन कर फेंक। ठीक है, मजे से आया मंजन। ठीक है, मजे से आया मन। ठीक है, फेंक दे ठीक है। देखे बारात आने मजे से बारात। वेरी गुड, वेरी गुड फायजा, everything is correct, very good. Is there anyone who is stuck right now? Giving you guys 2 more minutes. 2 मिनट और लीजिए आप लोग। अगर किसी को, देखिए बहुत अफसोस की बात होती है, हम इतना पूछते हैं आप लोगों से, आंसर भेजिए, नहीं आ रहा तो बताइए, फिर भी आप लोग कुछ बताते ही नहीं है। शांति से बैठे रहे, ना आंसर भेज रहे हैं ना बता रहे हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, यू गाइस हैव 2 मिनट्स, जितना हो सकेगा, जितना हुआ है आपसे वो भेज दीजिएगा। यस सर। आंसर आया, लिख लिया आपने? यस। ओके, ठीक है। देखिए, व्हेन आई से ना मेटल हायर अप इन द सीरीज, हायर अप मतलब जो पहले आ रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायर अप, शावेज? जीरो से ऊपर। हायर अप का मतलब जो पहले आ रहा है जी, मतलब कोई हमने फिक्स पॉइंट नहीं रखा है। अब जैसे अगर हम बात करें, इफ आई टॉक अबाउट लिथियम एंड पोटेशियम, तो कौन ऊपर है? विच इज हायर अप? लिथियम। समझ में आ गई बात? यस। ठीक है, हाँ अब बताइए आप, जिंक और कॉपर में कौन ऊपर है? टेल मी, जिंक और कॉपर में कौन ऊपर है? जिंक। जिंक ऊपर है, तो जिंक क्या हो जाएगा? मेटल हायर अप इन द सीरीज हैज लोअर एसआरपी, हेंस यूज्ड एज एनोड। व्हाट? एनोड। तो यहाँ पे जिंक हो गया एनोड,
कैथोड क्या हो जाएगा, कॉपर। अब ये बताइए निकल एंड Ag, देखिए आपको हम एक सिंपल चीज बताते हैं, आप ऐसे ये कीजिए, वेडिंग एलिमेंट्स हैं, आर दीज वेडिंग एलिमेंट्स और दीज आर छापा एलिमेंट्स, यस। ठीक है। तो वेडिंग है या छापा, इसमें पहले क्लासिफाई कर लीजिए, बताइए निकल इज वेडिंग एलिमेंट और छापा एलिमेंट। निकल कोई निकल इज निगाहें नॉट, सुंदरी, क्या निकल है, ये नहीं है, ये नहीं, क्या बोल रहे हैं, सॉरी। निकल इधर नहीं शायद ना, निकल से। अरे कैसे नहीं है निकल, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, निगाहें इज निकल, ओके ओके। है ना, निगाहें यस, इज निकल, निकल इज निकल इज वेडिंग एलिमेंट, एनोड। हाँ निकल इज एनोड, एंड Ag is छापा एलिमेंट, दैट इज it will be कैथोड। cathode, ठीक है। देखिए किसी का आंसर नहीं आया अभी, वेट अ सेकंड, ओके। राबिया आपसे नहीं हुआ, राबिया, No, so yes, I'm still doing it. still doing it, please send me whatever you have done, please send me Okay, whatever, sir. okay, ठीक है। तारीफ, what about you? Sir, I finished, but I can't send. अच्छा you can't send, ठीक है। थर्ड वाले का बताइए, what is anode, तारीफ। Sir, CN is the cathode and PB is cathode. Yeah. CN is ZNS, anode and PB is cathode. CN, क्या बोल रहे हैं आप, yes तारीफ, you have CN Z is and CN, anode. Yes. Zinc is anode and lead is not. ठीक है, okay। Shaviz, what about next one, Fe and copper, yes which sir, will be anode, Fe and copper, which will be anode, Fe and copper, Fe will be anode, sorry, yes, Fe बोलिए will बोलिए, be anode, copper will be cathode. ठीक है। For chromium and cadmium, So Rabia, waiting for your answer, chromium will be anode and next बताइए, Mg and Mn, Mg is anode, and Mn, Mn cathode, ठीक है। एल्युमिनियम और Mn में, aluminum, एल्युमिनियम एंड Mn, कैडमियम, कैडमियम आपका फेंक दे और ये प्यार भरी है ना, फेंक दे पहले आता है, कैडमियम एंड प्यार भरी cadmium. बाद में आता है। लेके बारात का आना मजे से है, बारात पहले आएगा, आया बाद में आएगा Al। कहा तो आपने आंसर नहीं भेजा, How did you do this? फहद ये हो गया आपसे कि नहीं हुआ, भाई साहब क्या पता चलेगा क्या, हो गया, ठीक है, चलिए। Right, next application used to predict feasibility of reaction, feasibility of reaction, ठीक है। What does this mean? It means, for example, if you have copper 2 plus Ag, if they have given you this type of reaction, giving you copper plus Ag plus, and they are asking is this reaction possible or not possible, तो आप यहाँ पे क्या देखिएगा, first of all you will see what is getting reduced, copper क्या हो रहा है, it is getting reduced, and what is happening to Ag, Ag is getting oxidized, Ag is getting oxidized, ठीक है। इसका मतलब there are few things that you can say according to the reaction, ये क्या है, according to reaction, what is getting oxidized, Ag is getting oxidized, that means, और अगर आप ये बोलना चाहें copper is getting reduced, आप ये बोल सकते हैं SRP of copper should be greater than SRP of Ag, why, because copper is getting reduced और Ag reduce नहीं हो रहा है, इस reaction का direction इधर है ना,
ठीक है. So what is happening? Copper is getting reduced instead of Ag. That means SRP of copper should be greater than SRP of Ag. Now tell me, is this true? Is this statement true according to the electrochemical series? Is the SRP of copper greater than SRP of Ag? बताइए please. Look at the chemical series, electrochemical series, and tell me, is this true? No, sir. This is not true. All of you saw that? Yes or no? Please tell me. सबने देखा कि नहीं देखा? Yes, sir. ठीक है. Yes. This is not true. According to reaction, this is the statement, but in reality, this is not true. And that is why we will say that this reaction is not feasible or not possible. Not feasible, or we can say not possible. ठीक है. अब प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्या क्या करना है आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल आइडेंटिफाई what is getting reduced, है ना, and according to that reaction you will write that the SRP of the species that is getting reduced is greater than the SRP of the getting oxidized. अब फिर उसको चेक कीजिएगा किससे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से. If it matches, then it is possible. If it does not matches, then it is not possible. ठीक है. So I will write a few reaction. आप उसके बारे में प्लीज बताइएगा whether it is possible or not possible. Number 1. यहाँ पे आप SRP लिख लीजिए. बताइए किसकी SRP ज्यादा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. टेल मी, SRP किसकी ज्यादा है? कॉपर की या Fe की? टेल मी. Copper. अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन. रिएक्शन देखना सिर्फ आप. रिएक्शन में जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? कॉपर का. एंड नाउ इज दिस ट्रू अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आल्सो? बताइए. No. क्या कॉपर की SRP ज्यादा होती है आयरन से? Yes, Yes or sir. no, guys? Yes, sir. Right? Yes. 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 So this is feasible. Yes, this is feasible. ठीक है. समझ में आ गया कैसे करना? Yes or no, please tell me. Yes, Yes. sir. Yes, got it. SRP, this is according to reaction. चलिए नेक्स्ट लिखिए. Zn2 plus Pb giving you Pb2 plus zinc, copper plus Zn2 plus giving you Zn plus copper 2 plus fourth लिखिए Ag plus Pb giving you Ag plus Pb2 plus. चलिए, we have 3 questions. Take 2 minutes. राबिया ने क्या फोटो भेजी? Sir, Yes, tell me. sir, how is it feasible? How is it feasible? Yes. First of all, tell me, according to the reaction, SRP of copper is greater than Fe, yes or no? What is getting reduced? Copper. Acha, according to the electrochemical series, yeah, is this statement true? क्या ये true है according? हाँ? No. Why? Copper की तो ज्यादा होती है ना SRP. Copper Yes, की yes, positive yes, होती है, yes. iron का negative होता है. That is why it is feasible. Got it? According to the reaction Yes, sir. जो है electrochemical series के according भी वही है. That is why it is feasible.
चलिए, time is up. Let us look at this one. Okay, somebody sent me answer. Answer check कर लीजिएगा आप लोग, है ना? Because I have to do one more topic. एक है उसको complete कराना है फिर I will end the class. Now, what is getting reduced here? Zinc. Zinc is getting reduced and Pb. So zinc का SRP क्या होता है? Zinc is from Manjan element. This is from Ruksati element, right? So this is not possible. Okay, because Pb का ज़्यादा होता है. Then here also we are having zinc is getting reduced. Again, this is also not possible because one is wedding element, the other is chapa element. In this case, what is getting reduced? Ag. Ag और यहाँ पे Pb. This is fine because Ag is a chapa element and Pb is a Sundari Pyarbhari is a wedding element. This is true. ठीक है? चलिए. Please check your answer. I hope if you have doubt, please let me know. ये 3 सवाल आप लोगों ने किए थे. Next, right? Fourth. Predicts whether a metal can liberate hydrogen gas from an acid. ठीक है? एसिड में देखिए क्या होता है. एसिड में होता है H+. ठीक है? And metal, if it is in cationic state, metal will be having Mn positive. M with some positive charge. Now hydrogen also requires electron and it can get converted to H2 gas. Around half H2 gas. Now metal also requires electron and it will get reduced and form metal solid. ठीक है? Now when you add a metal inside acid या फिर आप metal के salt में acid डालो. If you are adding acid in metal salt, then there is a probability. Either the hydrogen will be क्या हो सकता है? Hydrogen क्या हो सकता है? Hydrogen will be reduced or the metal will be reduced. Hydrogen के reduce होने की probability क्या है? This is SRP is what? SRP is equal to 0 and this is a constant. ये change नहीं होता. But depending on the metal, what we can say, whether it is having higher SRP than hydrogen or lower SRP. अगर metal की SRP ज़्यादा हुई, then it is going to liberate hydrogen gas, or not liberate hydrogen gas. It is not going to liberate hydrogen gas. अगर metal की SRP कम हुई, तो क्या होगा? Hydrogen reduce होगा and it is going to liberate hydrogen gas. ठीक है? देखिए, if you are having, if SRP of metal is higher than 0, then metal will be reduced because उसकी reduction potential hydrogen से ज़्यादा will be reduced and H2 gas will not be liberated. ठीक है? That means कौन से एलिमेंट होंगे ये? छापा एलिमेंट. छापा एलिमेंट्स की क्या होती है? SRP पॉजिटिव होती है. That is why they do not release hydrogen gas. वो क्या हो जाते हैं? खुद reduce हो जाते हैं, हाइड्रोजन reduce नहीं करते. Then if SRP of metal is less than 0, then hydrogen gets reduced. I should write H+ will be reduced and H2 gas will be liberated. That is, ये कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? वेडिंग एलिमेंट्स. Understood all of you? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Clear है सबको? ठीक है? वेडिंग एलिमेंट्स होंगे, क्या करेंगे वो? They are going to release hydrogen when they are added on acid.
लेकिन जो छापा एलिमेंट्स है दे आर नॉट गोइंग टू रिलीज हाइड्रोजन। ठीक है, everyone done? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes. Done, sir. Done. Okay. Now please revise for a few minutes, है ना? And then